Hello everyone, am I audible? Manoj sir, I have made you a co-host. So could you please just let me know if my voice is audible to you? Manoj Yes, Ganga I sir? can hear you clearly. Okay. I can see that Lieutenant General Anil Malik sir is also with us. We are just waiting for Aditya Bhatnagar sir. As soon as he join the session, we will start our webinar. As this webinar is getting recorded, so we will share it on YouTube for our other audience to hear it as per their convenience. So we'll just wait for 2-3 minutes, and after that, we'll start the session. I think Mr. Aditya Bhatnagar sir and Ritesh sir has also joined. Uh, Updesh sir, can we start the session? Hello, Krishna, are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sure. Welcome you all. Now you can proceed, Krishna. Okay. Getting evening and all present here. Today on Dr. Kalam left us with, we today are taking this legacy ahead with collaboration with NEEV, which is IIT Delhi Alumni Initiative called National Education Enrichment in Village. Other initiative which we have collaborated is IDYM, which is Ignited Dreams of Young Mind Foundation. This foundation basically deals with space education among students. Its founder and president, Mr. Ratnesh Mishra, has also joined us in the session. He's the first project manager. He's the project manager of the first student satellite, Pratham.
Also, we have this opportunity to collaborate with Sudati Global Academy Auraiya. It is amongst the best school in this location in Etawah, Uttar Pradesh, and providing best education to the student to cherish their dreams in life. Today, when we gathered here to celebrate this uh, occasion, that to carry forward the legacy of Dr. APJ Abdul Kalam, I believe as the youth, we had this question, we always have this question in mind. Does this conditions that like जो चीजें अभी हो रही हैं, are these things good enough to sustain life? When as a teacher I interact with student, especially like student of age 12, 13, 15, when I ask them about their vision for India 2047, what they think of India, there is this notion in their mind that there will be water scarcity, unemployment, pollution. So sometime when I think of Dr. APJ Abdul Kalam, I feel or I think he's a dynamic leader, because whatever he thought back then is completely applicable now. After retiring from the post, after basically completing his term as the president of India, he joined college, he started teaching, he is starting interacting with students, because the thought that if we are able to ignite dreams, ignite willpower amongst youth to make changes which are better for everyone, which are creating a livable planet Earth, then probably we are going to have a happier future. So with his dynamic leadership today, with his legacy, with his idea and dream, we had this privilege to have discussion on this topic called creating livable planet Earth with our esteemed guest. First one is Lieutenant General Anil Malik sir. He has served as DG headquarter, former DG headquarter, and with his insight of serving as a leader in the Indian Army, I believe he can definitely help us know how we can train the youth of this country to build a better tomorrow. Then we have Mr. Aditya Bhatnagar sir. I had the privilege of meeting Aditya Bhatnagar sir in Chandigarh, especially when I saw him teaching fourth or fifth grade student how to build a pulley. It was really amazing, because a person like him who's graduated from IIT Delhi, had an experience of more than 30 years, and now devoting his time and knowledge for students to build their tomorrow. Because eventually when we are investing in the future generation, then only I believe things or beautiful achievement that we aspire for can happen. So we will also listen to Mr. Aditya Bhatnagar about his uh, activities, how he is planning to reform education, how things can be made better to create a livable planet Earth. Thereafter, we have Mr. Ajit Kumar. He's with us for almost 2 years. He's the founder of an foundation called Khushi Gram, which is working on the sustainable development goal for more than 20 years. His vast experience in the field of sustainable development and his vision for Khushi Gram, happy village, is really very intriguing. I believe I believe his challenges, whatever he has felt around this 20 years, can be really intriguing for each one of us, because it's easier to think, but it's difficult to act. Mr. Ajit Kumar is one among the people who acted upon his desire for sustainable development. So we will be having this discussion with Ajit Kumar as well. Finally, we have Mr. Manoj Layanka, sir. He is with us from the time of inception of the idea of Together We Dream. He is currently posted as education officer in Indian Training College, Panchmadi. He is also associated with as trainers in OTA and IMA, Dehradun. So we will basically have the privilege of having listening to these esteemed guests, as well as our collaboration with Sudhiti Global Academy. We have chairman of Sudhiti Global Academy, Dr. Anand, who is also city coordinator of CBSE city coordinator Etawah, Auraiya, and Jalon.
Currently, due to some health reason, he's not able to join on time. Probably, if circumstances are okay, he will be joining us around 6 p.m. So, without wasting much of the time, I would like to begin this discussion. First, I believe just because Ajit sir has a vast experience and struggle of working in the field of sustainable development. So I would like to hand over the mic to Mr. Ajit Kumar to basically explain the theme and start this discussion on what are the challenges and need for sustainable development, and how when we talk about creating a livable planet Earth, how like this next generation can do it. Over to you, Ajit sir. Hello. Namaskar, everyone. It is great to be with prominent people like you, and there is a lot to learn. In fact, I am speaking from a place and an environment that we all want to be there. I am in a lawn of Vidhan Sabha, Delhi Vidhan Sabha. There was a program here, and since I had committed and had to be there, we are always partnering together with Dream and Neve, and we are trying to make a change because more partnerships are very important. And one of the sustainable development goals is on partnerships. So this is one thing that we are doing together with all of you. So welcome everyone, and it's great to be here. So there are other 16, 17 sustainable development goals, and totally we have 169 targets. Most of you must be knowing in sustainable development. This was passed by the United Nations in 2015, and India is a signatory also and a major player now. And we started Khushigram in 2011, 4 years before that, and in partnership with India Habitat Center, and there were many other partners during that process. So, uh, in fact, there was some network issue, so I'm closing my video, but I'm walking in a lawn in Delhi Vidhan Sabha. So what we need in life. So let me go back to the basics. Uh, and I'm seeing General Saab with us, and Aditya Bhatnagar ji is there, Updesh ji is there. So wonderful to see you all. Uh, Basically, clean air is the first thing that we require, and we want, and we need. In fact, more than 5 minutes, I think rarely anyone can survive without clean air. Still, we put it one of the last in the priority list. In a city like Delhi NCR, where many of us reside, and General Sir would agree with me, we are living in an air quality which is either very worse, very bad, and we are happy with the air is quality is said bad. We are happy it's bad only, not very bad, not worse. Moderate to kabhi hota hi nahi, it's very rare. So clean air is one very important thing. Second is water, clean and healthy water. Third is food, again healthy food. What we eat, we all know, laden of pesticides, chemical fertilizers. We can go back and have the same old healthy food that we had. Natural farming is a very important system which is advocated by Padma Shri Subhash Palekar ji. He got Padma Shri for that in 2015. So we have been working together since 2008-9. So we learnt a lot from him, and it's very easy. Forest food kind of environment is created. So take care of many of the sustainable development goals and targets, as well as you take care of yourself and the family and the village and the entire environment. So water, air, food, then we come to livelihoods. Livelihood should be sustainable and green as it was earlier. So how we have to move, there's a lot. It's a very long discussion, many points, but there are many green things that we can do. Minimum packaging. We need to change our lifestyle. So we should use what we require. Not we want to, not for just for pleasure. We should do something. Then we come to wellness. Our health was very good earlier. Why? Because we live with the nature. So clean air, water, food we had already. And we had peace and harmony. Why? Because that environment was there. In a concrete area where we stay now in the cities, big cities especially, 1,000, people would be very lucky would have more than 15,000 square feet, 1,500 square feet, sorry, 1,500 square feet. अधिकतर लोग रहते हैं 1,000 स्क्वायर फीट, 1,200 स्क्वायर फीट या उससे कम भी बहुत लोग रहते हैं. इनफैक्ट ज्यादा लोग उससे कम में ही रहते हैं. तो ये चैलेंज जो है हमारा कंक्रीटाइजेशन का, इसको हम कैसे रिड्यूस करके वापस धीरे धीरे उस जगह पे जा सकते हैं जहां हम घर बना सकते हैं जो हेल्दी घर हो, जो हमें क्लीन एयर दे, क्लीन ऑक्सीजन दे, प्लस
हमारा एनवायरनमेंट को ठीक रखे। तो वैसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास। अभी देसी गाय का गोबर यूज कर रहे हैं लोग, मिट्टी यूज कर रहे हैं लोग, बैम्बू यूज कर रहे हैं लोग, और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, पुराने जो घर के जो टूटे हुए चीज है उसको यूज कर रहे हैं लोग, रीयूज कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले तो हमको रिड्यूस करना है, रीथिंक करना है, फिर रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, और रिसाइकिल एकदम लास्ट में आता है। रिसाइकिल एंड अपसाइकिल लास्ट में आता है। वो तो जब, क्योंकि रिसाइकिल के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है, अपसाइकिल के लिए भी एफर्ट्स की जरूरत है। पहले जैसे आप लोग को याद होगा, एक सिंपल लाइफस्टाइल एग्जांपल देता हूँ कि पेरेंट्स का कपड़ा जो है, फादर का कपड़ा, बेटा, मतलब इसमें जेंडर की कोई बात नहीं है, औरत का भी वैसे होता था, माँ का बेटी वैसे, बेटा पहनता था, छोटा भाई पहना, लास्ट लास्ट तक 40 साल 30 साल कपड़े चलते थे। और उसके बाद भी वो फेंका नहीं जाता था, उसके बाद उसका बनता था झोला, बैग्स, जो हम आजकल लेके चलने में बहुत सारे लोग शहर में नहीं लेके चलते हैं और पॉलिथीन्स लेके चलते हैं, तो झोला लेके चलते थे लोग ताकि उसमें सामान आ जाए कपड़े का। और उसके बाद बनता था पोछा। पोछा कोई बाजार से खरीदता नहीं था, पोछा घर में ही बनता था। तो इस तरह की चीजें हम एग्जाम्पल से वापस हम वहां लौट सकते हैं जहां हम लौटना चाहते हैं, और ये एकदम अर्जेंट है। इसमें कोई ये नहीं कि हम कल से करेंगे, अगले साल से करेंगे और 2 साल बाद से करेंगे, करना तो अभी शुरू करना पड़ेगा। बेशक हम शॉर्ट टर्म टारगेट, मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं कि हम ठीक है 5 साल या 10 साल, 10 साल में हम पूरा कर लेंगे। और 10-15 साल से ज्यादा का अगर टारगेट रखते हैं तो वो फिजिबल नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि 15 साल लोग सोचते हैं तो हमारी उम्र ही नहीं रहेगी या हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे। तो वो चीज एक मतलब उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। तो हमको टारगेट्स ऐसे ही रखने चाहिए जो अपने लाइफ टाइम में, अपने जब हम कुछ कर सकते हैं तब हम कर पाए उसको, मतलब फुलफिल कर पाए। उसके बाद हमारा आता है हैबिटेट। हैबिटेट की मैंने बात की, किस तरह के हैबिटेट्स हमें चाहिए। हेल्दी हैबिटेट चाहिए जहाँ ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो। 398%, हार्वर्ड की एक रिसर्च है, 398% एफिशिएंसी बढ़ती है ऐसे एनवायरनमेंट में। तो उस तरह का एनवायरनमेंट, जैसे घर के अंदर हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं जो काफी मतलब ऑक्सीजन देते हैं, काफी अच्छा क्लीन एयर रखते हैं। और साथ में अब हर्ब्स भी लगा सकते हैं घर पे, और घर में कुछ हम मेडिसिनल प्लांट्स के अलावा कुछ वैसे प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे हमारे कुछ सलाद हो, वेजिटेबल्स हो, उगा सकते हैं। और आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए खास करके, 100 स्क्वायर फीट में अगर अच्छे से किया जाए तो आराम से 1 किलो सब्जी हर दिन आप निकाल सकते हैं, हरी सब्जी अच्छे से, और ज्यादा भी निकाल सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा कम करके बोल रहा हूँ, हमारे दोस्त जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी करते हैं इस पे काम और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें अपने अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में, उसमें हम ये सिस्टम करना पड़ेगा। साथ में हमें वाटर हार्वेस्ट करना पड़ेगा। पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देसी गाय के गोबर की बात की थी, तो एक चीज और बताता हूँ। जो डिजास्टर्स होते हैं, खास करके फ्लड्स और ड्राउट, उसको हम बचा सकते हैं अगर देसी गाय हमारे पास हो और देसी गाय का गोबर और गौमूत्र हमारे पास हो। तो जमीन के अंदर पानी परकोलेट करता है, एक्वीफर में पानी बढ़ जाता है, सरफेस पे पानी नहीं रहता है, तो सरफेस फ्लड्स नहीं होता है, ड्राउट भी कम होता है। बहुत सिंपल चीज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई 2-3 जगह मैंने देखा है कि आपके बगल के जमीन में पानी नहीं जा रहा है अंदर, बट जहां पे आपका ऐसी मिट्टी है जिसमें कि गोबर गोमूत्र डाला हुआ, वहाँ पानी अंदर जा रहा है और आपको साफ दिखता है वो। मतलब 3-4 घंटे के बारिश के बाद भी मैंने देखा सरफेस पे पानी नहीं है। तो ये छोटा से छोटे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है जो मैं देना चाहूंगा। उसके अलावा एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन हमारा पहले होता था, अभी सब हम लोग वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन पहले एजुकेशन हमारे गुरुकुल में होते थे। तो गुरु जो थे हमारे, मेंटर जो होते थे, मेंटर होते थे वो। अब लोग मेंटरशिप ला रहे हैं एजुकेशन में, बट गुरु के मेंटरशिप तो हमारा पहले से था। और गुरु माता अपनी माता की तरह ही होती थी, मोर देन योर मदर, मतलब। और स्टूडेंट केयर भी करते थे, उनका बात भी करते थे। और शुरू से बच्चों की स्किल आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी कि ये बच्चा किस चीज में बेटर कर सकता है, और वो फिर आगे बढ़ती थी चीजें। और उनको फिर ट्रेनिंग देते थे तो वो सुपर स्पेशलाइज लोग निकलते थे। और तब वो मतलब टॉप लीडर्स होते थे, जैसे कि हम, मतलब जनरल साहब जैसे लोग हैं, इस तरह के लोग निकलते थे बहुत सारे। अब तो बहुत कम लोग निकल पाते हैं उस तरह का। तो एक चीज ये है। उसके अलावा एक और पॉइंट रह गया जो मेरे दिमाग में था, जिसकी बात मैं करना चाह रहा था, वो है मतलब एक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फिर आर्ट है, फोक फोक क्लासिकल आर्ट, क्राफ्ट्स, कल्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट। जब सारी चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के टच में रहने के लिए सब मीडियम जरूरी है। पहले फोक आर्ट और पेपेट्री और बाकी आर्ट्स के थ्रू लोग टच में रहते थे, शेयर करते थे, एंजॉय करते थे। जब सारा काम खत्म हो गया उसके बाद एक साथ बैठ के लोग सुनते थे। दूसरा, स्पोर्ट्स खेलते थे लोग, गेम्स खेलते थे साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है, ये भी चीज एक जरूरी है ये भी। और ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स में आता है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जब होती है तो हम खुश रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि चिड़िया हो आसपास, मोर हो या बाकी चीजें हो, तो वो मतलब एक पूरा जो है सिस्टम बना रहता था, वो सिस्टम बना रहता है वो।
तो उन चीजों को वापस लाना है। तीन जो एनवायरमेंट की तीन इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, बस मैं एक लाइन में जिक्र करूंगा उनका। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और एक है क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी, और एक है ट्रीटी है वो इसके ऊपर है डिजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। तो ये तीन ट्रीटीज पे भारत ने साइन किया है और बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया है। तीनों को अगर हम कर लें जैसा ट्रीटी में साइन किया हुआ है, तो हमारी एनवायरमेंट और उसके साथ सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। साथ में लाइवलीहुड्स पे जो हमारा रिस्क लगता है, जैसे फार्मिंग के ऊपर अटैक हो जाता है एनवायरमेंट के कारण, टेम्परेचर के कारण, या सॉइल क्वालिटी के कारण, या केमिकल पोल्यूशन के कारण, या कीड़ों के कारण, तो वो सब नहीं होगा उतना, उसमें काफी इंप्रूवमेंट होगी। तो ये चीजें थी। उसके बाद पीस हार्मोनी सबको चाहिए, तो पीस हार्मोनी की बात है जो इंपॉर्टेंट है करना। उसके बाद पार्टनरशिप्स का मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था। शेयर केयर की जो स्पिरिट थी हमारे सिस्टम में, भारतीय सिस्टम में, जो एजुकेशन के थ्रू इनकलकेट होती थी, फैमिली के थ्रू और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के थ्रू इनकलकेट होती थी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अभी काफी हमारी इफेक्टेड हो रही है, खराब हो रही है। और आप लोग को बता दूं कि इस पे हम लोग एक फिल्म मेकर अवार्ड्स, फैमिली मेकर अवार्ड कर रहे हैं टू रिकॉग्नाइज पीपुल्स वर्क इन फैमिली। फैमिली में वर्क वर्क माना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो तो पैसे नहीं लेते हैं ना। माँ आपसे पैसे नहीं लेती है, पिताजी पैसे नहीं लेते हैं, भाई बहन पैसे नहीं लेते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली सिस्टम। उसी के बेसिस पे भारत का कल्चर और इकोनॉमी दोनों वर्ल्ड में टॉप पे था, और लोग मिल के काम करते थे। तो वो चीज वापस लाने की जरूरत है, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। और पीस और हार्मनी एक साथ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे तो होगा। मेरे ख्याल से ब्रॉडली मैंने काफी चीजों को कवर कर लिया है। तो इसके अलावा कुछ होगा तो मैं कोई प्रश्न ले सकता हूँ। मैं एक कार्यक्रम में भी आया हूँ दिल्ली विधानसभा में, तो वो भी एनवायरमेंट का ही कार्यक्रम है। तो मैं रहूंगा, और अगर कुछ होगा प्रश्न तो मैं लास्ट में ले लूंगा हाथ। ठीक है, धन्यवाद सब लोग का सुनने के लिए पेशेंटली। मुझे उम्मीद है मैंने बोर नहीं किया आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो अजीत सर, एम आई ऑडिबल? हेलो Yes, Krishna, we can hear you. अजीत सर, बिफोर प्रोसीडिंग एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जो आपने चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं एज अ टीचर जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि कई बार हमें पता होता है व्हाट आर गुड हैबिट्स। इसी तरीके से जैसे आपने चीज़ें बताई, तो हमें बहुत से लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और अवेयरनेस कैंपेन रन करने में, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो जो चीजें सबको पता है वो नहीं हो पाती हैं उस तरीके से? मतलब नेग्लिजेंस है, या फिर पॉलिसी मेकिंग का रीजन है, अवेयरनेस का रीजन है, क्या रीजन है कि जो चीजें सबको ऑलमोस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पता है हम लोगों को, जो यूएन ने भी डिफाइन किए गए, वो उस तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाते हैं? हाँ, हो गया। राइट। हाँ, इसका रीजन क्या है? दो तीन एकदम बेसिक रीजन है। एक तो है कि हम लोग जो शेयर केयर की जो स्पिरिट है बहुत लैकिंग हो गई है। तो हम सब मतलब सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना स्वार्थ ही हमारे लिए प्राइमरी चीज हो गया है। उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ग्रीड, शेयर केयर को छोड़ना पड़ेगा, और ट्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, और पार्टनरशिप लाना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे कृष्णा भी मेरे फैमिली के पार्ट है, जनरल साहब भी हमारी फैमिली के पार्ट है, उपदेश जी भी हमारी फैमिली के पार्ट है, भटनागर जी भी हमारी फैमिली के पार्ट है, सब एक फैमिली है, भाई बहन, अंकल आंटी जो भी है, चाचा चाची सब है, ताऊ है, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम सबके बारे में सोचेंगे, जैसे अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं। तो ये स्पिरिट वापस धीरे धीरे आएगी जब हम लोग, जैसे हम लोग ने काफी कम्युनिटी अच्छी हमारी बन रही है और बनेगी। तो उसमें हम लोग करीब 200-400 लोग हैं जो हम लोग इसी तरह से सोचते हैं, और कुछ भी होता है तो सब साथ आ जाते हैं। कितना भी बड़ा डिजास्टर हो, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, तो बड़ा प्रॉब्लम जो वैसे बहुत बड़ा लगता है अकेले एक फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, वो तुरंत सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी की बहुत प्रॉब्लम है, सब लोग जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी एक्शन ले लेती है, लेना पड़ता है उसको, जब लोग एक साथ आते हैं तो जब साथ आएंगे लोग ना, वो मेनली साथ आने की बात है। साथ आना बहुत जरूरी है, और घबराना नहीं है, सपने देखने हैं, प्रयास करना है। प्रयास करेंगे तो सफल होगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 30 साल 40 साल लगे, सफल सफलता मिलनी ही है। तो उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए, साथ मिलकर काम करते रहे तो जरूर काम होगा। और अभी हम लोग एक लास्ट में, कृष्णा ने चूंकि प्रश्न पूछा था तो बता दें, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी में, मतलब आप अगर कृष्णा की जगह इटावा को ले ले आप, या जनरल साहब हम लोग अगर ग्रेटर नोएडा को ले ले, तो उस कम्युनिटी में कैसे हम पूरे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो रेलेवेंट टारगेट्स हैं वहां पे, 169 में से 100 टारगेट्स एवरेज मान लीजिए रेलेवेंट होते हैं, नहीं रफली,
तो वो 100 टारगेट्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं विद पार्टनर्स, एनजीओज, आरडब्ल्यूएस, कॉर्पोरेट्स, एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, और सबके साथ मिलकर हम कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं। टारगेटेड अप्रोच टाइम फ्रेम में हम लोग अब काम कर रहे हैं, और काफी सारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, नोएडा की, गुड़गांव की, दिल्ली एनसीआर की, अलग अलग जगहों की, गाजियाबाद की, आईएमटी गाजियाबाद है, एमडीआई गुड़गांव है, बिमटेक है ग्रेटर नोएडा का, ये सब आगे आ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आप जिम्मेदारी लीजिए, लीड करिए, हम लोग सब साथ हैं आपके। तो हमारे पास लैब्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे फैकल्टी होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, साथ मिलके कर सकते हैं। साथ मिलके करेंगे तो संभव है, नहीं तो फिर तो 2030 क्या 2050 तक भी नहीं पूरा हो पाएगा, और साथ मिलके करें तो 2030 तक हम लोग अभी भी कर सकते हैं। बस इतना ही कहना है, धन्यवाद। Thank you very much, sir. With this wonderful answer, we would like to take forward this discussion to Lieutenant General Anil Malik sir. जो आंसर अभी अजीत सर ने दिया, कहीं ना कहीं मेरा जो क्वेश्चन जनरल सर से है, वो उसी से रिलेटेड है। अजीत सर ने कहा कि जो प्रॉब्लम, द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम इज अबाउट हाउ वी वर्क इन द सोसाइटी, हाउ वी लिव टुगेदर, हम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एंड आई बिलीव इंडियन आर्मी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो लोग एक दूसरे को किस तरीके से कोलैबोरेटिव तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एक रेजिमेंटशिप, मैंने आई वॉज टॉकिंग टू एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, मैंने आस्क्ड हिम कि सबसे बड़ा क्या लर्निंग होता है इंडियन आर्मी में जिस वजह से कोई भी पर्सन इतने बड़े सेक्रीफाइस करता है, तो ही टोल्ड मी इट्स अबाउट स्पिरिट ऑफ रेजिमेंटशिप। मतलब उसको अपनी रेजिमेंट से सबसे ज्यादा लगाव होता है, नाम नमक निशान। तो सिमिलरली आई बिलीव ऐसा क्या करना चाहिए सर आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, कि जिस तरीके से यूनाइटेड होकर हमारी इंडियन आर्मी काम करती है, एक्ट करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, मिशन एग्जीक्यूट करती है, इन द सिमिलर वे हमारी जो जनरेशन है, यूथ है, हमारे जो इंडियन सिटीजन है, उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करें हमारे पॉलिटिशियंस। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करना चाहिए, what should be done and what are the challenges for it? Thank you, Krishna. First of all, it's a great privilege and honor to be here. And on the occasion जिसको हम कमेमोरेट कर रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को की याद में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा पर्सनल उनके साथ 4-5 बार मिलने का मौका मिला, बोथ इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। उनके साथ उनको सुनने का मौका 2-3 बार मिला, जब उन्होंने फौज के ऑफिसर्स को लेक्चर दिया। मैं यहाँ पर नेशनल डिफेंस कॉलेज है दिल्ली में, जिसमें मैं फैकल्टी में था, वहाँ पर भी उन्होंने लेक्चर दिया, जो कि एक इंटरनेशनल ऑडियंस। तो उन सब चीज़ों के साथ उनके साथ मिलने का मौका मिला। Before I come to what Ajit ji has talked about, I want to share with you what lessons I learned from him, और उनसे उन्हीं चीज़ों को देख करके जो आज सोसाइटी किस डायरेक्शन में चल रही है और किस जगह पर हमको पार्टिसिपेट करना है, जिस चीज़ में हमको कोलैबोरेट करना है, और किस तरह से आगे वाली जो जनरेशन्स हैं उनको गाइडेंस देनी है कि वो। तो कुछ एग्जाम्पल मैं उन्हीं के बताए हुए टॉक्स से पहले शेयर करना चाहूँगा, जो के विद यू। सबसे पहले उनका हर टॉक में एम्फसिस ये था कि जब तक हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल, देश का हर नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं समझेगा, तब तक ये जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम, सोसाइटी में डिवाइड, जो अजीत जी ने एग्जाम्पल दिए हैं, हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जो कि सोसाइटी जब तक एक साथ नहीं होगी और देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा, तब तक हम वो अचीव ही नहीं कर सकते। उन्होंने ये सब लोगों को ये अपने लेक्चर में कई बार बताया कि सरकार बहुत कुछ करती है। सरकार आपको
अपॉर्चुनिटीज देगी। और आप अभी हम देख रहे हैं, अभी से क्या, शुरू से मैंने तो पूरी अपनी लाइफ में देखा है, हर समय सरकार किसी न किसी मेथोडोलॉजी से, किसी तरीके से हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर एम्फोसिस दे रहे हैं, हेल्थ केयर पे एम्फोसिस है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि एक बज़वर्ड बन गया है आज की दुनिया में, उसकी तरफ कंट्रीब्यूशन सब कर रहे हैं। लेकिन जब तक देश के नागरिक नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे, तो ये देश और ये दुनिया एक गुट होकर के कभी नहीं चल पाएगी। मैं अपने आप से एक एग्जांपल इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक सिंपल सी चीज है कि हमारे देश में पिछले करीबन 9-10 साल से शायद ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। I think crores and crores of rupees have been spent. A lot of good work has been done. We have created environment in villages where people are able to live a private life. Toilets have been created, living facilities have been improved. Yet, today when you walk on the street, and I can take an example of the national capital, and whether it's the national capital region, the filthiest roads that you see anywhere are in Delhi or the surrounding so-called national capital region. तो सरकार पैसा लगा रही है, लोग सफा करने के लिए भी आ रहे हैं, और मैंने देखा सुबह 4 बजे से लोग, हम आप और मेरे में से ही लोग उसको सफा करने में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कचरा कौन फेंक रहा है रोड पर? हर आदमी ये सोचता है मैं अपना घर साफ रखूंगा, मेरे घर से गेट के बाहर या दरवाजे से बाहर क्या है उससे मेरा क्या मतलब। This is the difference. This is where the problem of cooperative, collaborative societies is missing. And why is this missing? Is it missing because our generation, apologies to all those here present here who may be my generation, have we failed in setting the right example? Have we failed to bring out to the common man as to what is required? I'm happy that we acquired terms like sustainable development. The NGOs are doing a great job. Everybody's pitching in their best. But why is it that the change that you want, you may see, sometimes I use this word, sometimes you hear these words in pseudo societies. Okay, which implies that societies which are detached from reality. They may be good cocktail party discussions. You can have seminars in Vigyan Bhavan or Vikas Bhavan or whatever Bhavan. But ground पे उसकी implementation क्यों नहीं हो पा रही है? भटनागर साहब हमारे साथ बैठे हैं, great educationist. You may be able to guide us better as to, is this being brought to the education system in the schools? Is this child in the home being taught the right values? Unless the right values are brought in. Sorry? मुझे अपना देखो, जब तक मुझे अपना, मेरे को तो नहीं आ रही, नेट खत्म हो गया। ओके, जब तक ये चीजें कॉमन मैन, हर बच्चा, हर नागरिक के मन में नहीं लाया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कोई मेजर चेंज आने। थर्ड fastest growing economy in the world. Today, the world is looking at us, for example. But yet, when it comes to
seeing the way we live, the way we move around society, there is always a fear that there is something not going correct, something not happening the way we want. And I think मेन चीज है हमारा अपना नजरिया क्या है सोसाइटी की तरफ, हमारा अपना नजरिया अपने लाइवलीहुड की तरफ क्या है. डॉक्टर कलाम कई बार कहते थे कि एक एजुकेशन सिस्टम मस्ट हैव वैल्यूज डेवलप. Now, if the value system, if my teacher is going to come to my class, I don't mean any offense to anybody, but a few observations. Is going to come, make sure that I score 99.99 marks in the CBSE examination. How much of the time has been spent on providing the good values that are required? और ये value system कहाँ से start होता है? फौज में हमारे हर स्टेज पे एम्फेसिस है. लोग कई बार कहते हैं आपके यहाँ लोगों को ज्यादा डिसिप्लिन पे जोर है, ज्यादा डंडे का डर है. अगर सिर्फ डिसिप्लिन और डंडे के जोर से फौज चलती तो क्या आपको लगता है कि कल जब हम कारगिल विजय दिवस मना रहे थे, क्या वो लोग जो वापस नहीं आए वहां से, क्या वो डंडे के डर से नहीं आए थे? क्या उन लोगों ने जो अपनी जान गंवा दी वहां पर, क्या वो डिसिप्लिन और डंडे की वजह से नहीं आए थे? एक वैल्यू सिस्टम बनाया गया है. वहां पे उनको मालूम है कि एक कोलैबोरेटिव सोसाइटी है. फौज का हर जवान और उनके परिवार के लोग ये समझते हैं कि कल अगर हमारा सोल्जर, ऑफिसर, जवान लौट के नहीं आता तो पूरी फौज उसके परिवार को देखने के लिए खड़ी. These are the values that system brings in. अजीत जी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए रूरल एम्प्लॉयमेंट के और पुराने जमाने के एनवायरनमेंट के. आज मुझे मालूम है कि मैं एक अपार्टमेंट ब्लॉक में रहता हूँ. यहाँ पर 24 टावर हैं. हर टावर में करीबन 1000 अपार्टमेंट है इस सोसाइटी के अंदर. पर मेरे को अभी यहाँ आए हुए 3 महीने हुए हैं. मैं मुश्किल से 4 लोगों को जानता हूँ और कई लोग मेरे को मिले हैं यहाँ पर जो कि 8-8, 10-10 साल से रह रहे हैं. लेकिन कौन उनके साथ वाले अपार्टमेंट में रहता है या ऊपर वाले अपार्टमेंट रहता है उसको ना पता है और ना उसकी तरफ से कोई कोशिश है. तो कैसे ये सोसाइटी कोलैबोरेटिव? ये सवाल मैं खुद नहीं जवाब दे पा रहा इनका. I am convinced in my mind that until we bring about changes in our own mindset, in our own attitude I think हिंदी में नजरिया, अगर हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, और सबसे जरूरी जो कि पहले एजुकेशन सिस्टम में दिखाया जाता था और मैंने जो पढ़ा है और सीखा है, और ये वर्ड मैंने अब्दुल कलाम जी से भी कई बार सुना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. Are we grateful to the country for providing us the amenities? Are we grateful to society for living us in a collaborative manner? Are we grateful to our family for having created that environment? For my understanding and growth. कई बार मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस में टॉक देने के लिए गया हूँ, स्कूल्स और कॉलेजेस में दिल्ली एनसीआर में, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने एक कॉलेज में सवाल पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ यू बिफोर लीविंग योर हाउस टुडे इन द मॉर्निंग हग्ड योर मदर?
a very high flying institution, one of the top institutions rated in the country. There were only 3 students who were able to answer the question in the right manner. Only 3 students who were able to accept how much regard they give to the parents. Now, if this attitude of gratitude is not there to your own people, family, how will you ever learn to be grateful to society? How will you learn to be collaborative? आप सड़क पे उतर जाइए. You have to see the road rage that occurs on the road. People are shouting at each other. People are fighting with each other. Because everybody is now joined a rat race. Okay, so these are some of the values which I feel that we do. Respect for elders. कितनी बार आपने सुना होगा, कितनी बार खुद कहा होगा, अरे बुड्ढे रास्ते से हट. These are values which are missing today. And unless we adopt these values and changes, nothing much is going to happen. I like to touch upon what Ajit ji mentioned also. The question also talked about cohesion and collaboration in the services, and obviously its application to society. सर्विसेज के अंदर जिस दिन से एक सैनिक आता है, वो अब उसका घर है, उसका एक साथी है, उसके हर जवान के साथ एक सिस्टम बना दिया गया है, एक बड़ी सिस्टम जिसके साथ वो अपना कार्रवाई कर सकता है. और चाहे वो पीस टाइम हो, चाहे लड़ाई हो, वो बड़ी हमेशा उसका साथ खड़ा रहेगा. वो सोसाइटी, उसका घर उसके साथ हमेशा रहेगी. ये चीजें जब तक सोसाइटी में नहीं आएंगी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत एम्फेसिस दिया. Obviously, like I said, we are third fastest growing economy in the world today. Lot of emphasis on infrastructure, but what we forgot that we are interfering with nature. Last week there were massive floods in Delhi, in the Yamuna River. The Yamuna rivers used to follow a path. The banks were well laid out. और आज आप अगर उसको स्टडी करेंगे, जो पिछले हफ्ते फ्लड आए थे या कुछ साल पहले भी आए थे, कि यमुना रिवर अपने ही पाथ पे चला था. सोसाइटी ने उस नेचर को स्पॉइल करके in a race for making more infrastructure, more buildings, unplanned development has taken place. And that is why we are facing these situations. I think we all, सबने पढ़ा है example of जोशीमठ. पहले सब बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे पैदल, या today we want to go right up to the temple in luxury vehicles and cars. This is creating facilities for ourselves, but we live in a country which has got young, old mountains. We are destroying nature. You destroy nature, you will suffer the impact of this. So we may be able to achieve the sustainable development goals today, tomorrow, bring down pollution. I don't think even a slightest amount of effort is made by the common man to bring down pollution. Okay, 2 more points I want to make. Our healthcare system. I am afraid, I'm sorry, I may be sounding controversial, but the healthcare system is not sustainable to take care of the common man and of everyone. बहुत schemes आई हैं, Ayush, and I'm sorry I don't remember the name. But actually, has the country accepted that healthcare is one of the most essential things?
Everything else, your infrastructure, your economy, your environment will come later if the healthcare is taken care of. You have to go outside any hospital, and you have to see the way people are lying on the road. You have to, आप अगर कभी ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है दिल्ली में, आप उसके सामने की सड़क पे दिखलिए कैसे लोग जमीन पे पड़े हुए हैं और अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर अगर आपको घुसने का मौका मिल गया तो लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए, फीस भरने के लिए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट हेल्थ केयर। I won't touch too much on the education thing because we've got very prominent educationists here. So that much for my thought process. But I always feel that one of the thoughts I always remember of Dr. Abdul Kalam was he coined a term called PURA, P-U-R-A, providing urban resources in rural areas. What was the thought process? शहरों को कंजेस्ट मत होने दो। जो फैसिलिटीज आप अर्बन एरियाज में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, जैसे भी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप अगर रूरल एरियाज में ले जाएंगे तो जो अभी ओवरबर्डन्ड अर्बन एरियाज हो रहे हैं, जो कि अभी कोलैप्स हो रहे हैं सिस्टम, ना तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनको सस्टेन कर पा रहा है, ना एजुकेशन सिस्टम सस्टेन कर पा रहा है, ना हेल्थ केयर सिस्टम सस्टेन कर पा रहा है। अगर वही आप रूरल एरियाज में ले जाएंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी एक रूरल आदमी को शहरों में आकर के? और शहरों में भी कोई उनको ऐसा अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसको ये नहीं पता कि आज सुबह कहाँ रोटी खाऊंगा, कल शाम को कहाँ रोटी। So thank you. I'll stop here and come back wherever we have a discussion. Thank you. Thank you very much for sharing your insights, sir. Before moving ahead, I have a small question for you, sir. जैसे मैंने पढ़ा कलाम सर से, कई बार जब मैं सुनता था स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके दिमाग में एक थॉट होता था कि स्टूडेंट मस्ट हैव पर्पस इन लाइफ, एक ड्रीम होना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि आज की जनरेशन कहीं ना कहीं कन्वेंशनल अप्रोच नहीं रखती है। उनके पैशन होते हैं, उनके ड्रीम होते हैं, लेकिन जब व्हेन दे आर फॉलोइंग देयर ड्रीम एंड पैशन, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं, उनकी क्लैरिटी नहीं होती है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता है। तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब लोगों ने अपने ड्रीम्स फॉलो किए तभी ये दुनिया बेहतर बनी। somebody dreamt of phone, मोबाइल फोन, somebody dreamt of इंटरनेट, और आज वो सब चीजें हुई। तो जो पैशन को फॉलो करने वाली बात है वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी एज अ टीचर और जो मेरी खुद की जर्नी रही, मुझे रियलाइज हुआ है कि पैशन को फॉलो करना, प्रॉपरली रियलाइज करना कि उनकी क्या स्किल है, उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आप इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहें कि स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने प्रोफेशंस को ऑप्ट करें, किस तरीके से पैशन फॉलो करने की सोचें और कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें? Thank you, Krishna. Very interesting question. I have no doubt that every individual, every student who goes into school or college has a dream. In some way or the other, everybody is trying to fulfill their dreams. A lot of majority of people may be fulfilling their dreams. So while it's okay, we talk always of the big success stories. कि किसी ने मोबाइल फोन बना दिया, किसी ने कोई ऐसी चीज बना दी जो कि, पर हर स्टूडेंट और खासकर आज के स्टूडेंट बहुत फोकस, जो मेरा इंटरेक्शन होता है बहुत उनको फोकस है। और खासकर अभी ये जो नई पीढ़ी है, इनका मोर देन, जो पहले हम लोगों का फोकस होता था कि सर्विस क्लास है, जॉब करना है, अभी ये सब माइंडसेट चेंज हो गया है। अब हर आदमी कोई ना कोई
सोचता है कि मैं कोई नई चीज बनाऊं, मैं इनोवेट करूं. एवरीबडी वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट? बट sometimes entrepreneurship may be missing by not getting the right guidance, and sometimes it may be missing by not having the right resources or not understanding what are the resources that are required. बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को मिला हूँ, IIM ग्रेजुएट्स. एक लड़का और उसकी वाइफ थी, दोनों IIM ग्रेजुएट. उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ये वड़ा पाव बनाने का, and that became a success story because they maybe IIM put them in the right guideline, and also the right resources were made available. The banks were cooperative, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम. तो इन ड्रीम तो हर एक करता है. बहुत लोग मेरे को मिलते हैं जो सेना में जाने का ड्रीम था कि हम भी सैनिक बनना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि everybody can't get to one place. Similarly, everybody can't become a IAS officer or everybody cannot become a teacher. Most important person, the teachers. Okay? Everybody cannot become a teacher. Okay. So, पर क्या होता है कि उनको सही रास्ता नहीं मिला. और मेरा मानना है कि जो सेना में नहीं भी जा पाए, they are doing a marvelous job outside. Because the focus in the army is in selection of people who fit into a particular environment. If I am too much of an independent thinking man, I may not fit into that environment. Because the focus is on collaboration, right? So, integration. Some people may not do, so he may be more suited for a different environment. So, dream तो सभी कर रहे हैं, और dream बहुत बढ़ गए हैं. आपके मेरे सॉरी आपको तो नहीं मैं कह सकता, पर बाकी भटनागर साहब वगैरह हैं, हमारे समय में इतने एवेन्यूज ना तो दिखाई देते थे, ना मालूम थे, और खासकर अर्बन एरिया फिर भी शायद अखबार पढ़ लेते थे, जो रूरल एरिया में शायद वो भी नहीं पहुंचता था. तो एवेन्यूज वर नॉट देयर. टुडे आपकी जहां तक सोच ले जा सकती है, वहां तक नए अपॉर्चुनिटीज, ये और चैलेंजेस भी हैं, पर ये आपकी गाइडेंस, मेंटरशिप, एजुकेशन सिस्टम, आपके टीचर्स, आपके सोसाइटी वाले लोग, आपसे पुराने एक्सपीरियंस लोग, हम लोग जो पहले सोसाइटी में रह चुके हैं, अगर हम सही तरीके से वो फोकस कराएंगे, गाइडेंस कराएंगे, तो there will be many more success stories emerging from this country. Dream you must, and dreams will always be fulfilled provided you get your attitude, your mindset, and your focus right. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing your insight. We will take, if there are questions from the audience, we will take it later on. Moving ahead with our discussion, to Mr. Aditya Bhatnagar sir. I had the privilege of meeting Aditya Bhatnagar sir and attending one of his session with primary class student, where the student were basically building a pulley. Aditya sir gave them a task that they have to design a pulley, and the beautiful thing was that Aditya sir was also telling them how to cut the wood, like basically take the measurement and all. When someone like him, जिनका इतना vast experience है, he's amongst the alumnus of among the best institution of the country. उसके बाद when he's sharing the knowledge with a 10-year student or a 12-year student, I believe एक transitional shift, this will bring a transitional shift. जो changes हम चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम छोटे से ही इंसान को इतना क्रिएटिव और क्रिटिकली बिल्ड करें, और वो बिल्डिंग स्पेशली जो एक्सपर्ट लोग हैं अगर उसमें वो लोग इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से हो सकती है. There was one discussion I was having with Aditya sir where
आई वाज टेलिंग हिम कि जैसे नॉर्मली जब डिस्कशन होता है तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं कि ये सोल्यूशन हो सकता है। तो आई वाज टेलिंग हिम कि ये सोल्यूशन हो सकता है, बट आदित्य सर सेड कि आप जैसे किसी भी चीज का सोल्यूशन बताते हैं, इंजीनियर्स बिल्ड द सोल्यूशन ताकि वो सोल्यूशन सब पे एप्लीकेबल हो। तो जो सोल्यूशंस की अजीत सर ने और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल मलिक सर ने बात की, एज ए इंजीनियर आपको क्या लगता है कि क्या चीज बिल्ड की जानी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है या फिर क्या नहीं हो सकता? आपको जो चीजें लगती हो प्लीज आप अपना थॉट्स शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ। ओवर टू यू आदित्य सर। जस्ट वन मिनट सर। So, Krishna, can I share screen, or is it possible for me to do that? I have made you co-host or promoter. Just check if you are getting this option of sharing. Check. Yes. Hello. Yes, sir, you are audible. I am audible. All right. So, I don't know if you can see my screen or not, but We can see your screen, but it is coming black. I don't know the reason. Maybe it is taking time to download or internet glitch, because the size of pixel size of pictures that are used in the presentation is quite big, I believe. Okay. So, I think without wasting time, I'll kind of start. And ये जो हमारी आज, okay. So, are you able to see my screen now? Yes, sir. Yes, sir. Great, great. It is visible now. So, this is really, it is dedicated to President Kalam. And not only was he a remarkable person, in my mind, he was one of the most remarkable scientists. क्योंकि जो भी उन्होंने करा और जो भी मेरी थोड़ी बहुत कभी इंटरेक्शन हुई उनके साथ, and whatever I've read of his books, they are very practical, they are practice based. और हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक दैट इज वेयर वी काइंड ऑफ लैक, कि हम उसको प्रैक्टिस बेस्ड somehow नहीं कर पा रहे हैं. I think I have to stop sharing because ये मूव नहीं हो रहा है. So I'll not share. I think that is that. Maybe sir, file size is large. That's why internet glitch की वजह से internet. Please stop sharing. Maybe it is file size. now moved. I think it's moved, but it's not moved in the screen. All right. So I think I'll stop sharing and I'll just go ahead, because there are just 3, 4, or 5 slides, so it doesn't matter. Stopping the sharing. Ratnesh sir, are you there? Hey, it is not. Hello, Ratnesh sir, are you there? Okay. So, sir, you can continue with without presentation. I'm going to continue without presentation, and I think that's a better idea, because just waste time otherwise. Okay. So he was a remarkable person because he
believed in practice. And whenever you talk to him, or whenever you, whatever books you read of his, whatever he's written, it's all about practice. कि जो आप कह रहे हो, आप कर क्या रहे हो? What are you doing? And the previous two speakers, the way we've talked about value systems and about कि हम किस तरीके से we are the way that we are going forward. So what is it that is really challenging for us now, as particularly for young persons? There are a couple of things which are extremely important, and I would like to dwell on those and then come back to your question. So one thing is that why should we care? We might think that why should we care for the environment? What is people talk about sustainable development goals, and we talked about Swachh Bharat, a lot of things happening, but really the attitude or our value system not changing along with. So that whole thing about collaboration, about doing things together, about making a major change can never happen unless हम एक साथ एकजुट होकर के अपने अपने जो हमारा नजरिया है, हम नजरिए को चेंज ना करें. और इसके लिए हमें ये सोचना कि why should I care? My question was कि and why should you care? And being a scientist, as as Dr. Kalam was, you should question. You should question, why should I share? Why should I do this? It is not going to be comfortable, because हमें जब अपनी हैबिट्स या अपनी आदतें चेंज करनी होती हैं तो इतना आसान नहीं होता है. It is very very challenging. क्या हमें वापस जाना है? We have to go back to things which were 200 years ago. हमें exactly करना क्या चाहिए? What is it that we have to do? और ये करना क्यों है? तो इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें थोड़ा सा we should keep that in 1960, you can say the percentage of the percentage of carbon dioxide is 0.03%. It now stands at about little more than 0.04%. So one might think कि 0.01% बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इंक्रीज होता है उतनी हमारी वार्मिंग इंक्रीज होती है. एंड ये जितना हमारा टेम्परेचर और वार्मिंग इंक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा हमें तकलीफें होंगी, जैसे फ्लड्स हैं, जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल और अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स हैं, चेंजेस इन क्लाइमेट्स हैं. तो इसके लिए भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए for example 12,000 years ago there was a huge flood. 12,000 साल पहले there is archaeological evidence कि बहुत भयंकर फ्लड आया था. अब वो फ्लड आया था उस वक्त तो कोई ऐसा था नहीं कि पोल्यूशन हो रहा है या फैक्ट्रियां चल रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है. So earth goes through its own cycles. Maybe this is an earth cycle. लेकिन whatever measurements have been made, they show that it is particularly after industrialization and after the consumerism that the changes have gone haywire. और इसमें एक हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं? Is only man responsible? Is only India responsible? Certainly not. But is man responsible? Maybe, because we are the creature who consume the most. और कोई क्रीचर ऐसा नहीं है जो कपड़े पहनता है. Nobody else wears clothes. हम कपड़े पहनते हैं, that means कपड़े बनाते हैं. हम कपड़ों के लिए कुछ उपज करते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं. All of these consume energy. और एनर्जी कहाँ से आती है? प्रेजेंटली जितनी भी एनर्जी आ रही है, most of it is coming from carbon fuels. हम घरों में रहते हैं, अब घर भी बनाते हैं तो लाइक
where Jaran Saab was saying staying in a tower, you know, with 1,000 odd dwellings in that. So there is a huge cost to that, not in terms of money, but in terms of energy. और हमें ये सोचना है कि हम कहाँ पे एनर्जी हम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और किस तरीके से हम ये जो एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं इसको हम what steps we can take to reduce it. You know, it was mentioned earlier that कपड़ा एक लेते थे, बच्चा पहनता था, उसका झोला बनता था, फिर उसका पोछा बनता था. Today we have a wardrobe of clothes जिसमें इतने कपड़े होते हैं कि भाई आज मेरे को ये जीन नहीं पहनी, ये पहनना है. It's not you know impossible to be fashionable, but एक सस्टेनेबल हैबिट नहीं है. तो हमें जितना हम उसको कम कर सकते हैं, जितना हम उसको वी शुड लुक गुड, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से हम अपनी कंजम्पशन को हम यू नो कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. अब उसका मेजर क्या है? हाउ विल यू मेजर दैट? बिकॉज अगर आप साइंटिस्ट हैं और साइंस में बिलीव करते हैं तो बिना मेजरमेंट के कुछ होता नहीं है. तो आपको ये देखना है कि आप जो भी आप चॉइसेस करते हैं, जो भी आप you know whatever you are thinking of, your choices that you are making, वो आप you are what is that contributing to? If you are for example and you can calculate yourself, I will not say, अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और अगर आप घर में दाल रोटी बना रहे हैं तो दाल रोटी बनाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है आपकी, नहीं ग्लोबली इतनी एनर्जी लगती है या पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में. और या आप देखिए हर एक चीज़ में एनर्जी लगती है, क्योंकि पिज़्ज़ा वाला जो है वो पिज़्ज़ा उसने आटा कहीं से मंगवाया, मे बी फ्रॉम सम फार ऑफ प्लेस. He has made it after all that cooking which has taken place. Somebody has carried it. कोई मोटरसाइकिल पे आया है, आपके पास फ्यूल लगाया उसने. So there is, ये आपको हमें खुद सोचना है कि how you know what is best for us, what is best that we can do. So everything that we do consumes energy and it consumes carbon dioxide. हम ब्रीथ करते हैं तो of course we cannot stop breathing, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रो करती है. और मजे की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जाती है, it takes 300 to 500 years for it to come back into the carbon cycle. जब तक 300-500 साल वो हमारे 300 से 500 साल हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है. So that is really an important thing which we should consider. So इसमें एक call to action है. You know, every book of President Kalam was a call to action. So I invite you to do this, take this action, that try to become energy literate. Or energy literate के लिए there is an energy literacy course. You can look it up on the internet. I could have given you, shown you the link and other things. This is Professor Solanki, who is there, who's called the Solar Man of India, and he is runs this energy literacy course, which is wonderful. It is just about 3 or 4 hours. लेकिन आपका नजरिया उससे बदल जाता है. Your whole outlook changes when you you know look at this thing. So I'd invite you that please go to this. It's called energyswaraj.org. Register for this, and they provide you with something which is known as a climate clock. अब climate clock क्या होता है कि you can buy a DIY set, and if you are अगर आप जैसे स्कूल हैं तो you can buy that और आप उसको अपने यहाँ लगा सकते हैं. तो climate clock क्या होता है कि it is a counting down clock कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें उसको हमने मेजर किया है और we you know it has been calculated कि 1.5 degree जब when the temperature rises by 1.5 degrees with respect to 1880, the changes that we do will start becoming irreversible. यानी कि हम जो भी करेंगे उसके बाद में उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता जाएगा. हम पौधे और लगाएंगे, हम अपना लेट्स से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे, हम सोलर यूज करेंगे,
उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि उतना सारा कार्बन अब ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में जा चुका है। तो इस चीज़ को अगर हम थोड़ी गहराई में सोचते हैं, तो हमें क्या करना है? इफ वी हैव दैट क्लॉक विद अस, इट टेल्स यू राइट नाउ दैट 1.5 डिग्रीज पहुंचने के लिए अभी मात्र 6 साल हैं। ओनली 6 इयर्स आर लेफ्ट। सो 6 इयर्स में वी शुड मेक सम rapid changes in our lifestyle, in our thinking, in the way that we look at uh, everything which is around us. और अगर आप इसको टू हार्ट लेंगे और थोड़ा अपने साथ बिल्कुल एकजुट करके करेंगे हम, तो इट इज नो डाउट दैट वी कैन स्टिल make sure that this 6 years becomes 12 years and 12 years becomes 18 years and so on and so forth, and so we push the thing back. But इसमें हमें every every choice that we make, everything that we do, we should make intelligent choices. uh, some friends of mine, to give you an example, just went to Srinagar, and they reported that now they have got 3 or 4 malls in Srinagar. Srinagar never had malls. So is it a good idea to have a mall where बिजली खर्च हो रही, चाहे कोई हो या नहीं हो, ऑडियंस उसके अंदर हो या पीपल हैं या नहीं है, दैट एवरीथिंग इज रनिंग. सो इज इट अ गुड sort of choice to make? Is it a good thing to do? It looks very glamorous, और हम डेफिनेटली ग्लैमर हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है, लेकिन ग्लैमर अलग तरीके का भी हो सकता है. अगर हम थोड़ा जो सस्टेनेबल चीज़ें हम करते हैं उसको हम ग्लैमरस बना सकते हैं. वो ग्लैमरस कैसे बनानी है, वो उसके बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आप निकाल सकते हैं. इज इट सपोजिंग आई मेक अ झोला आउट ऑफ अ टी शर्ट, कैन आई मेक इट इनटू समथिंग ग्लैमरस? कैन आई डिजाइन a झोला made out of a t-shirt which looks doesn't look as if it's made out of this thing? It looks कि बहुत ही आर्टफुल चीज़ है, बहुत ही फैशनेबल चीज़ है. तो अगर हम अपना जो फैशन है उस फैशन को अगर हम रीयूज में लेके आएंगे, तो आई फील के बहुत सारी चेंजेस इसमें आ सकती हैं. जो आपने प्रश्न पूछा रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम को डेफिनेटली प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जितना हम प्रैक्टिस अपने एजुकेशन में लाएंगे उतना ही ये हमारे यंग जनरेशन को अपील करेगा. हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आजकल की जनरेशन पूछेगी नहीं. पूछना चाहिए, और बहुत सारे प्रश्न होते हैं और प्रश्न होने भी चाहिए, और उन प्रश्न को हमें एज टीचर्स वी शुड नेवर पुट डाउन अ क्वेश्चन. वी शुड ऑलवेज टेक दैट क्वेश्चन एंड से दैट ओके, अगर मेरे को अभी नहीं आता, मैं आपको पता करके बता सकता हूँ, या मैं किसी से पूछ के बता सकता हूँ, और आई कैन कनेक्ट यू टू सो एंड सो एक्सपर्ट एंड यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हिम, तो और हर. सो इट इज देयर. एंड ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस नहीं है. हमारे पास देखिए, वी हैव गॉट द ISRO, which is a fantastic pocket of excellence, where so many men and women have contributed to the space program. We have the the Indian Army, which General Saab talked about, and that's a pocket of excellence. You see people are there who will go out and stick their neck out, stick their necks out, whether it's Kargil or whether it's a rescue operation or whatever. और फौजी को सब लोग समझते हैं और मानते भी हैं कि फौजी जो है वो एक एग्जाम्पल बनेगा. हमारे सामने एग्जाम्पल है इनफैक्ट. तो ये जो है हमें थोड़ा इन चीज़ों में सोचना चाहिए. मैं ये नहीं कहता हूँ सबको फौजी बनना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सबको साइंटिस्ट बनना चाहिए. जो जहाँ आपकी ड्रीम है, जहाँ आपको लगता है कि आपको आप आपका रास्ता पड़ता है, ये आपका पड़ाव वहाँ पे है, प्लीज गो देयर. बट रिमेंबर दैट देयर आर बेसिक वैल्यूज which we have to imbibe. Those values are those of uh, living a sustainable life, making intelligent choices,
being rational, and remembering that we have to be collaborative. This is एक ही दुनिया है हमारे पास. We have only one earth. चाहे वो अमेरिकन है या अफ्रीकन है या हिंदुस्तानी है. We have got only this home. तो अगर हमने इसको बिगाड़ा तो बहुत कम लोग हैं, मे बी एलॉन मस्क जैसे, जो कि शायद मार्स पे जाके रहेंगे, लेकिन हम लोग तो यहीं रहेंगे. लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, जब तक आपके दिल को नहीं छूती है, तब तक वो कहीं उसकी बात बनती नहीं है. And I feel that one of the best ways to touch hearts of people is perhaps through music. And unfortunately, I can't share the visuals with it, but it's a very popular Hindi song. It was popular at least, and I don't know if I can see. आवाज आ रही है जनाब? यस सर. तो आपकी वॉइस ऑडिबल है, बट जो चल रहा है उसकी ऑडिबल नहीं है. नो सर. हाँ तो होगा नहीं. So I think I cannot but ये आप कोई भी अपना गीत निकाल सकते हैं related to anything which inspires you, जो आपके दिल को छुए, और उस चीज को आप लेके आगे चलेंगे. तो चाहे स्वच्छता है, चाहे सस्टेनेबिलिटी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपका अपना ड्रीम है, जब आप दिल से करेंगे तो बिल्कुल it will matter, and I'm sure that you will go ahead, go far. And so with all of us. So I think these are the points I wanted to make. If there are any questions, I'll be happy to take them. Okay. So I think hello. Hello, sir. I think Krishna is out of. He's dropped out. I think Krishna seems to have dropped out. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, I was also like traveling outside, so that's why I could not able to like join in between. But like today is like day where we can remember all the like learnings of Abdul Kalam ji. और आप लोगों ने जो बातें कही हैं बड़ी अच्छी थी कि भाई आदित्य सर की बात सुना था कि भाई हमें जो पैशन है वो फॉलो करना चाहिए. उन्होंने भी कहा था कि जैसे उनका जो कंटिन्यूसली लगातार हम लोग को काम करते रहना चाहिए. तो फोकस्ड होना, एम होना और हमें लगातार काम करते रहना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कलाम जी ने भी हमें सिखाई थी. और सभी लोगों का ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा तो बड़ा अच्छा लगा. नई नई चीज़ें ऑडियंस को भी समझ में आई कि हमें क्या क्या करना चाहिए. मे बी अगर किसी ऑडियंस का कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क, और मे बी एनी पैनलिस्ट वुड लाइक टू आस्क something from other panelists. The forum is open now. So I think this, Lenka has not spoken yet. yes, yeah. So good evening, everyone. And Updeshi, before moving further, we'll also take Manoj sir's insight.
And just a few points before that from my side. So we run an NGO, IDBIM Foundation. So great to host you all. And we promote space education in school children's and all around. I was so lucky enough to got the chance to have one lecture by Dr. Kalam in IIT Bombay. So I graduated from aerospace engineering there. And so we worked on satellite project before, and I got a lot of questions on why to spend money in space and all when we have poor and other peoples all around. So I just have a simple example कि जब जनरली हम किसी भूल भुलैया में फंस जाते हैं तो जो इंसान वहां होता है शायद उसे पता नहीं चलता है, बट शायद वो इंसान जो हेलीकॉप्टर में है उसको दिख रहा होता है कि वो कहाँ फंसा है। उसी तरह से अगर मैं और ऊपर जाऊं तो शायद आसमान में एयरप्लेन के थ्रू हम कुछ चीज़ें जान सकते हैं, उसी में और ऊपर जाएं तो दुनिया की ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सैटेलाइट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, एक माध्यम है इस पूरे लिवेबल प्लैनेट बनाने का एंड उसको और से जानने का। जैसा आदित्य सर आपने बताया कि इसरो का प्रोग्राम जो है, आज जब एक कॉमन इंसान चंद्रयान की बातें करता है तो वो क्यों उसके बारे में सोच पाता है, जान पाता है, समझ पाता है। तो हम भले हम शायद कुछ ऐसी चीज़ें जान पाएँ जो शायद हम न करें आगे चलकर, ताकि हम चाँद या मंगल जैसा न बने, और या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम वहाँ पर है और जो हम करें कि हम इसको और सुंदर दुनिया बना पाएँ। तो यही एक छोटा सा थॉट है हमारा, और हम इस एनजीओ को, सिंस हम डॉक्टर कलाम जी को याद कर रहे हैं, तो उनके विजन एंड मिशन में आप तीन चीज़ें हमेशा सुनी होगी कि बच्चे, साइंस, स्पेस एंड एजुकेशन, शिक्षा। सो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमने हमारा एनजीओ स्टार्ट किया था। तो वी आर प्रमोटिंग स्पेस एजुकेशन टू ऑल अराउंड इन एनी सेंस, एंड बहुत ही जल्द एक मिशन के साथ हम छत्तीसगढ़ में स्पेशली, क्योंकि रूरल स्टूडेंट्स एंड ऑल अराउंड, सिंस मेरी जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, और वहाँ पर हम उन रूरल किड्स को इसके बारे में सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और उसमें आगे अग्रसर हैं। तो एक छोटा सा बस यही वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना था, एंड बहुत धन्यवाद। एंड बिफोर मूविंग to the overall point, so just would like to invite Mr. Manoj Lankar sir, and having a background in training, especially in army institutes and all, would like to know your thoughts about the discussions we are having right now, एंड किस तरह से हम चीज़ें उसके अराउंड बिल्डअप कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से या किसी भी एक फील्ड के माध्यम से। जैसा आदित्य सर ने बोला कि हम ज़रूरी नहीं कि सब कोई साइंटिस्ट ही बने या सब कुछ ये बने। सो ओवर टू यू मनोज सर, एंड थैंक यू। या प्लीज। Thank you, Ratnesh. I hope I am audible to each one of you. Yes. Okay. I feel privileged to be among this elite people today in this platform. Yesterday only we paid our gratitude to those people who gave their life in 1999. That was the 24th anniversary of Kargil conflict. We called it Vijay. So we remember those 527 people who gave their life protecting our motherland. And today, we are remembering Dr. APJ Abdul Kalam, and who talked about creating a livable planet Earth. While talking about this, I remember Mahatma Gandhi once said, the Earth has enough resources to meet the needs of all. The Earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. So Mother Earth is too very kind. If you look around, our human life is a blessing. And complete cosmos, including Mother Earth, is there to nurture us. It nurtures us from our birth till our death. The journey that you take from the lullaby to the lament
from the womb of our own mother to the womb of Mother Earth. It's a blessing. We look around, you see the trees. You throw a stone at the tree, it gives you fruit. It gives you shade. The birds, it gives us wonderful songs. It doesn't patent that song. The flowers, they give us these wonderful colors and fragrance. They don't ask anything in return. But most of all, when we do something, we ask, what is there for me? मैं ये करूंगा तो मेरे लिए क्या है? I think life lies in giving than taking. And that is what Dr. Kalam exemplified in his life. He remained a bachelor. He remained a minimalist. There are a lot of groups coming up. Nowadays, we generally see, okay, the world is going to the rats. It's not. Maybe. But at the same time, the younger people are becoming aware day by day. There are a lot of groups coming up. Younger generation is more aware than what we are in our age. There are a lot of groups like veganism. Some groups are there, they only live on fruits. They say this is a kind of contribution to make this world sustainable. Few weeks back, I came across a group, they call themselves anti-natalist. They say, we won't give birth to children because there's so many people in the world. So this burgeoning population that is exploding, let's shrink it further by becoming anti-natalists. There's a group called minimalism, and I'm trying to follow minimalistic lifestyle by reducing our wants. Like one of our speakers said, if we open our cupboard, there's so many things lying over there that we don't use. But since we have the power to purchase, we do not think twice before purchasing things. And when you do that, our carbon footprints that you leave behind, we forget that because it may be a very, very small step, but it becomes a giant step when so many people come together and increase their carbon footprints. So what we are doing, what I am doing, and I got a chance to serve in a school about 10 years back, a decade back. I was there in Golpara. It's a place in Assam, about 200 kilometers off from Guwahati. As a Sainik school. And I got to take care of about 400 plus young students studying from class 6 to class 12. So when I joined, I saw, okay, it's a kind of challenge for me to be accepted among them because they were there, that is their school. I just intruded for 3 years. The teachers, the students, it is their school. So from day one, I made it a point, yes, I have just intruded into their domain. What is my job is to make a difference by exemplify things. So what I wanted to do is whenever they celebrated their birthdays, I encouraged them, let's plant a sapling on your birthday rather than giving a big party, spending your father's money, to start planting a tree. And by the time I left, we could generate a kind of forested area over there, though Assam is known for a lot of trees, but still we could clean up those thorny plants and plant some plants that is useful for all of us. Currently, I am serving at Pachmari. It's a hill station. Here I am looking after the welfare of about 200 people, that training and administration. And here also I start my day doing exercise with them. I tell them 24 hours is there for each one of us. But still, can you extend that 24 hours? Yes, by waking up early. So whatever is the official time for their physical training, we generally start vitality 30 minutes ahead. So if the official time is 6 o'clock, we start at 5:30. By that, we extend the time. And when you do exercise daily, we start with not only exercising our body, I call it romancing with 3 begums.
The first begum is our body, second is our breath, and third is our brain. So once the three begums are happy and contented, then of course they make us feel like a Badshah. So we do it every day, each day. And while talking about that, we try to, even every Saturday, we try to do a kind of gratitude to Mother Earth by cleaning up the surface. So small steps that you are taking, I tell them this, our mother, universal mother is Mother Earth. So we can make a difference by cleaning up. If you're cleaning up, picking up something, think that you are cleaning up Mother Earth, the universal mother. When you're throwing something, it's like throwing something on your own mother. We won't feel like doing that. So that little bit of awareness that is being instilled within them, that I find is making a difference in their life. And today we are about 100 people today listening to each one of us. Great leaders are here. If we take small steps, I think we can make a difference to whatever we have talked about. The pollution, we talked about so many kind of pollution, light pollution, sound pollution, soil pollution, water pollution. But the mother of all this pollution, I could say, is mind pollution. Once a mind is polluted, then we start polluting the whole universe. So if we start becoming aware of this, whatever field we are in, wherever we are serving, if we can exemplify, like while going to the market, let's carry our thela, what Sir told just now. Dr. Aditya Bhatnagar talked about that thela made out of a unused t-shirt. So let's carry our own thela to the market. Let's others see, yes, this person, if he's talking about this, he's exemplifying that. Whenever I choose to cycle to my office rather than taking a vehicle, so that also leaves an impact in the people around me. So these small steps that you do, once I leave my office, even for 10 minutes, I switch off all the lights and fans. So that the people see and learn from whatever I do. And I strongly believe we can make a difference by following the small steps, and people who see us, they'll also get inspired and influenced to follow our footsteps. So let's be minimalists, and if possible, I've been following to becoming a vegan nowadays because I found a lot of videos are coming where this dairy industry is exploiting, because India has become the second largest exporter of beef. Till the cow is useful to us, we milk it. And once it is past its age, we sell it to be eaten. So this is criminal offense. So we can choose to change our own lifestyle and exemplify all this to make this world a livable planet. And as Professor Bhatnagar said, this is one world, one hope. This is one earth, one earth. We don't have a second earth to depend on. So let's make a difference by our small steps. With that, I conclude. Over to Krishna. I, thank you very much, sir. I think Krishna is not here. He lost some maybe internet connection. So thank you very much to all for having with us and blessing us with your ideas. And basically, these ideas was related to Abdul Kalam's ideas. So thank you very much to all. And I again thank you and
here is like a little bit emotional because it is the death anniversary of our beloved hero. So there are like lot of to say about the Kalam because he was coming from such a remote area and to the top of the nation. So it is his journey, and definitely it's a, like uh, he has reached milestone as well as he has shown the path to all Indians as well as to all the world. So we are very much grateful to have such a wonderful and kind president. So I think everybody has said a lot of things about him, about his ideas. So thank you very much for. I think we can now like stop this meeting. And just Thank you. So thank you, Rakesh sir. Thank you, Manoj sir. Thank you, Aditya ji, Anil, Malik sir. Thank you very much. Thank you, Krishna. Thank you. So we are going to stop this meeting. Thank you. Hello, am I audible? Ratnesh sir, am I audible? yes, Yes, we can hear you. Sorry, due to some technical glitch, I was not able to continue the meeting. I believe जो हमारा आज का डिस्कशन हुआ है वो काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है और उपदेश सर, रत्नेश सर और जो हमारे बाकी पार्टनर हैं सुधि ग्लोबल एकेडमी और या इनके साथ मिलके हम ऐसे इनिशिएटिव पे डेफिनेटली कंटिन्यू करते रहेंगे. एक जो लास्ट चीज आई विश टू आस्क, ये मेरे दिमाग में था क्वेश्चन. आई वाज ऑन अ बेसिकली रिगार्डिंग सम इशू, सोशल इशू. तो उस रैली में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पानी के छोटे छोटे कप. तो स्टूडेंट्स वर डूइंग व्हाट कि वो कप पी के फेंक दे रहे थे. तो देयर वाज सम स्टूडेंट हु वाज केयरिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, तो वो बेसिकली वो कप उठा रहे थे. तो आई सॉ देम, तो मैं भी उनके साथ उसी रैली में ज्वाइन हुआ. मैंने भी कप उठाना स्टार्ट किया. वो रैली अराउंड 1 किलोमीटर की थी, बट हुआ क्या कि रैली में 500 के करीब लोग थे और जो कप उठा रहे थे वो 3 से 4 थे. तो इवेंचुअली कप उठाते उठाते रियलाइज किया कि दिस इज नॉट फीजिबल. तो एज ए इंडिविजुअल कभी कभार ये थॉट आता है, और ये जो स्पेशली मेरा क्वेश्चन आदित्य सर एंड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल मलिक सर से है कि जो नेगेटिविटी आती है जस्ट बिकॉज जो हम कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं वी आर समबडी जो बहुत अकेले पड़ जाते हैं चीजों में. तो उस चीज को लेके आपका क्या ख्याल है? क्योंकि समवेयर आई हैव रेड दिस आल्सो दैट वर्ल्ड डज नॉट नीड वन मोर मिस इन्फॉर्म्ड सेवियर, दैट्स हिज जॉब टू सेव द वर्ल्ड. तो एक थॉट आता है कि जो छोटी छोटी हम चीजें कर रहे हैं, आर दे sufficient enough? Lieutenant General Anil Malik sir. I think this point has been adequately brought out by Bhatnagar Saab that each one's contribution is going to make a difference. We don't have to wait. While the ultimate answer lies in working together collectively, but contribution of each individual makes a difference. मैं थोड़ी देर पहले आई गिव एन एग्जांपल ऑफ सड़क पे कचरा फेंकना. अगर मैं आज से डिसाइड करता हूं कि मैं जहां भी खड़ा हूंगा अपने 50 फुट रेडियस सर्कल में ना किसी को कचरा फेंकने दूंगा, ना खुद फेंकूंगा. In couple of colleges where I gave talks, I got all the students to get up and take a vow on the lines that I've just talked about. Every person, individual contribution is going to make a difference. It is definitely going to make a difference, but we all need to join hands to feel the impact. Thank you. Mr. Aditya Bhatnagar sir, would you like to comment? Sorry, just a second. Unmute sir. Just very quickly, I think absolutely I agree with General Saab.
it's every one single person's effort which counts. And, we could get disheartened in Dr. Kalam's life. There were so many points when he faced failure. चीज़ें नहीं हुई जिस तरीके से उन्होंने सोचा था. And but he never got disheartened. तो हमें अगर हम उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं, टुडे वी आर रिमेम्बरिंग हिम, तो चाहे हमें लगे कि उस वक्त हम 500 लोग कब फेंक रहे हैं और 4 लोग उठा रहे हैं, हमें लगता है ये पहाड़ है, कहाँ से होगा. तो एक मे बी उसका तरीका चेंज करें, बट गेटिंग डिसहार्टेंड आई थिंक शुड नॉट बी द वे आउट. Thank you very much, sir. Sir, now I will request Manoj Lanka, sir, as the founding member and advisor of the Together We Dream initiative, to give away a vote of thanks to all our esteemed guests and our partner, Dr. Ubdesh Verma, sir, and Mr. Ratnesh Mishra, sir. Vote of thanks, sir. Okay. Thank you, everybody, for being here today in this platform. This is a novel idea that Krishna came up with, and we met at Kota when I was posted over there. And now it has been translated and slowly growing. The small seedling that he planted, now it is slowly bearing fruit. It's basically awareness is life, and being unaware is akin to death. So any kind of inertia is akin to death. At least we are making a progress to make people aware, and he's in his effort progressing forward. And today, the panelists those who are here today, Mr. Ajit Kumar, he's making a difference, practically doing it on ground by coming up with this concept of Khushi Gram, and he shared those ideas. I thank him on bottom of my heart and from this organization. Then coming on to General Anil Malik, he's also making a difference, going to different schools, talking to people, the students, the new generation. They call themselves Generation Z or Generation G. So this new generation, if they can be motivated, they can be made aware of. And as I told when I shared my ideas, they are aware of all this. Maybe they need to be told again and again. They forget. The peer pressure, the way the world is going, we forget. So in between, if this is instilled into them, they can make a difference, a huge difference. I'm also thankful to Aditya Bhatnagar, sir, for being here and telling us those practical tips. I like the concept that you told us about energy literacy course. It's a 3 to 4 hours of course. Yes, I have got interested to see what it talks about. I think all of us, those who are here, we need to go through that course to see how we can make a difference in the world that we live in, because we have got only one earth. And this mother earth is our universal mother, and we need to take those small steps to make a difference. This question that Krishna asked at the end, we sometimes get demotivated. What difference can I make? And the huge world is so big. My action, what difference does it make? This question was asked to Dalai Lama, whose birthday we celebrated around 4th or 5th of July. He said, remain in a small room with one mosquito, a small little mosquito, and you are inside that room. It doesn't allow you to sleep. So that is the difference we can create. Our small step can make a huge difference in the complete world. Let's exemplify 100 of us who are here today. If we can take those small steps and practically show it to the world, there'll be 10 other eyes watching us. They will also get influenced. Like Krishna talked about picking up those cups being thrown by others. When other people see, they'll also be aware that yes, they're making some mistake.
So if you do that, we'll make a difference, and this world is definitely going to become a livable planet Earth. So we have inherited this. Let's leave our footsteps behind for the generation. Thank you, everybody. And thank you for organizing this, Dr. Updesh Burma, who is the National Coordinator of NEEF, Mr. Ratnesh Mishra, the founder of IDOIM, and of course, last but not the least, Krishna Trivedi, the founder of Together We Dream. I think if we all dream, because that is what which came out of that box of, I'm forgetting that story of Bible, the hope, that was the last wasp to be coming out of that box. And that hope is equivalent to dream. If we have got this hope, if we can go on dreaming, definitely we can make a wonderful world to live in. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Krishna, do you have any last word? Or Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you, everyone. We all can leave now. Thank you, everyone. Okay.